नमस्कार। इस सीरीज़ में हम आज सेकंड वीडियो लेकर के हाजिर हुए। हम लोग बात कर रहे थे माइंस एक्ट 1952 की। फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे माइंस एक्ट 1952 की फर्स्ट चैप्टर और उसका कुछ सैम्पल क्वेश्चन। आज हम लोग सेकंड चैप्टर के बारे में जानेंगे। मैं रथिन विश्वास, असिस्टेंट जनरल मैनेजर माइनिंग, किरीबुरु आयरन और माइंस में आपको वेलकम करता हूं इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो में। आइए हम लोग जानते हैं माइंस एक्ट 1952 की अलग अलग चैप्टर। जैसे कि हम लोग पहले देखे हैं, इसको टोटल 10 चैप्टर्स है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर जिसमें सेक्शन 1 to 4 है, प्रिलिमिनरी, ये चैप्टर का नाम है, इसको हम लोग जान लिए। और किसी ने इस फर्स्ट वीडियो को मिस किया तो आप YouTube में इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सेकंड चैप्टर इंस्पेक्टर्स एंड सर्टिफाइंग सर्जन्स, इस चैप्टर के बारे में, जिसमें सेक्शन 5 to 11 इस सेक्शंस के डिटेल्स दिया हुआ है। हम लोग जानेंगे इस सेक्शंस के ऊपर और इसका कुछ सैम्पल क्वेश्चन आंसर जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में टोटल 5 से लेके 11 तक सेक्शन है, साथ में 9A भी ऐड है। हम लोग जानते हैं फर्स्ट सेक्शन जो इस चैप्टर का है, सेक्शन 5, वो है चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर। सेक्शन 6 में है फंक्शन ऑफ इंस्पेक्टर्स। सेक्शन 7 में है पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स ऑफ माइंस। सेक्शन 8 पावर्स ऑफ स्पेशल ऑफिसर्स टू इंटर मेजर्स etc। सेक्शन 9 में फैसिलिटीज टू बी afforded to inspectors. Section 9A facilities to be provided for occupational health survey. Section 10 secrecy of information obtained, and Section 11 certifying surgeons. This 11 सेक्शन 5 to 11 ये सेक्शंस जो है ये हम लोग अभी जानेंगे इस वीडियो में। Section 5 Chief Inspector and Inspector. The central government may, by notifying in the official gazette, appoint such a person as possesses the prescribed qualification to be Chief Inspector of a mine for all the territories which the Act extend, and such persons as possess the prescribed qualification to be inspectors of mines subordinate to Chief Inspector. इस एक्ट के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट गेजेट नोटिफिकेशन के द्वारा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी को अपॉइंट कर सकते हैं और बाकी DGMS ऑफिसर्स को इसमें अपॉइंट कर सकते हैं जो DGMS को, चीफ इंस्पेक्टर को सबऑर्डिनेट है। सेक्शन 2 नो पर्सन शैल अपॉइंटेड टू चीफ इंस्पेक्टर और एन इंस्पेक्टर और हैविंग been appointed shall continue to hold such office which is or becomes directly or indirectly interest of any mine or mining right in India। जिनके पास माइन और माइनिंग राइट है उनको चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर पोजीशन पे अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। अगर किया हुआ है तो ऑफिस कंटिन्यू नहीं कर सकता है। सबसेक्शन 3 क्या बोल रहे हैं? The district magistrate may exercise the powers and perform the duties of inspector subject to general or special order of the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल और स्पेशल ऑर्डर दे करके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी ये इंस्पेक्टर, माइंस इंस्पेक्टर की पावर दे सकते हैं, DGMS इक्विवेलेंट पावर दे सकते हैं। Provided that nothing of this subsection shall deem to empower the district magistrate to exercise any powers conferred by section 22 or section 22A or section 60 on। 22, 22A और 60 on के जो पावर है ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नहीं दिया जा सकता है। चीफ इंस्पेक्टर एंड ऑल इंस्पेक्टर्स शैल डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड का हिसाब से चीफ इंस्पेक्टर एंड अदर इंस्पेक्टर्स को पब्लिक सर्वेंट का हिसाब से ही जाना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 6 फंक्शन ऑफ इंस्पेक्टर्स। द चीफ इंस्पेक्टर्स में with the approval of central government and subject to such restrictions or condition as he may think fit to impose,
by writing in order authorize any inspector named or any class of inspectors specified in the order to exercise such the power of chief inspector under the act other than those relating to appeal as he may specify. चीफ इंस्पेक्टर अपना जो पावर इस एक्ट में दिया हुआ है उसमें कुछ डेलीगेट कर सकते हैं अदर इंस्पेक्टर्स को, और वो डेलीगेशन या स्पेसिफिक किसी एक को दे सकते हैं या ग्रुप ऑफ इंस्पेक्टर्स को दे सकते हैं. चीफ इंस्पेक्टर में बाय ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्ट एक्सरसाइज बाय any inspector named or by class of inspectors specified in order any power conferred of inspector under the act. चीफ इंस्पेक्टर अगर कोई इंस्पेक्टर्स को पावर इस एक्ट में दे रखा है उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. सबसेक्शन ऑन में एक पार्ट है जो अपील का जो पावर चीफ इंस्पेक्टर्स को दिया हुआ है वो उन्होंने डेलीगेट नहीं कर सकता अदर इंस्पेक्टर्स को. डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी अपना अपील अथॉरिटी रहेंगे, अदर इंस्पेक्टर्स को वो डेलीगेट नहीं कर पाएंगे. सबसेक्शन 3 क्या बोल रहे हैं? सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन contained in the section, chief inspector shall declare the local area or areas within which the group or class of mines with respect to which inspector shall exercise their respective power. chief inspectors एरिया बढ़ सकता है अदर इंस्पेक्टर्स को, जैसे हमारा अलग अलग रीजन है, जोन है, उसमें एरिया बढ़ दिया है, किस एरिया में किनका पावर रहेगा ये भी डिफाइन कर सकते हैं. पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स ऑफ माइंस. इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के क्या पावर है? द चीफ इंस्पेक्टर एंड एनी इंस्पेक्टर में चीफ इंस्पेक्टर एंड अदर इंस्पेक्टर क्या कर सकते हैं? मेक सच एग्जामिनेशन और इंक्वायरी एज ही थिंग्स फिट इन ऑर्डर टू ascertain whether the provision of the act and of regulations, rules and bylaws and of any order made thereunder are observed in case of any mine. कोई भी माइंस में चीफ इंस्पेक्टर अदर इंस्पेक्टर्स ये देख सकते हैं एक्ट का रूल रेगुलेशन बायलॉज और ऑर्डर का प्रोविजन फुलफिल हो रहा है कि नहीं. विथ सच असिस्टेंस इफ एनी ही थिंग्स फिट इंस्पेक्ट एंड एग्जामिन एनी माइन और पार्ट देयर ऑफ एट एनी टाइम डे और नाइट. डे और नाइट कभी भी इंस्पेक्टर्स माइंस एग्जामिन कर सकते हैं प्रोवाइडेड that the power conferred by this clause shall not exercise in such manner as unreasonable to impede or obstruct the working of the mine. माइंस का काम बंद करके ये पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज ये कर सकते हैं. नंबर सी, एग्जामिन इनटू और मेक इंक्वायरी respecting the state and condition of any mine or part thereof, the ventilation of the mine, sufficiency of the bylaws of the time being in force relating to the mine, and all matters and things connected with or relating to health, safety and welfare of the persons employed in the mine, and take whether any precautions of the mine or elsewhere statements of any person which he may consider necessary for carrying out the purpose of the act. तो माइंस एग्जामिन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर प्रोविजंस जो एक्ट में दिया हुआ है वो माइंस से फुलफिल कर रहा है कि नहीं. ये सारे चीज़ों के लिए चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर विजिलेंस ऑफिसर्स माइंस विजिट कर सकते हैं. एक्सरसाइज सच अदर पावर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रेगुलेशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस रिस्पेक्ट. रेगुलेशन में जो पावर दे रखा है वो पावर भी इंस्पेक्टर्स या चीफ इंस्पेक्टर एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल कंपेल अंडर दिस सबसेक्शन टू आंसर एनी क्वेश्चन और मेक एनी स्टेटमेंट टेंडिंग टू इंक्रीमेंट हिमसेल्फ. नेक्स्ट, the chief inspector or any inspector may, if he has reason to believe as a result of any inspection, examination or inquiry under this section that an offence under this act has been or is being committed, such any place or process of any material, any plain section, register, other records appearing of the mine and provisions of the Code of Criminal Procedures 1973 shall, so as far as may be applicable, apply to any such
or she is made under this act as to apply any such or she is made under the authority of warrant issued under section 94 of the code. ये इंस्पेक्टर्स कोई प्लेस का या मटेरियल का रजिस्टर को सीज कर सकते हैं या उनको प्रोविजन ले सकते हैं, जिससे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर्स में है उस हिसाब से उन्होंने ये पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस कुछ पार्ट से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये भी हम लोग देख लेंगे। पावर ऑफ स्पेशल ऑफिसर्स टू इंटर मेजर इट्स any persons in service of government duly authorized in behalf by a special order in writing of the chief inspector or of an inspector may, for the purpose of surveying, leveling or measuring of any mine or any output thereof, after getting not less than 3 days notice to the manager of such mine, enter the mine and may survey, level or measure the mine or any part thereof or any output therefrom, after giving not less than 3 days notice to the manager of such mine, enter the mine and may survey, level, measures the mine any part of any time by day or night, provided that where the opinion of the chief inspector or of an inspector an emergency exists, he may by order in writing authorize such person to enter the mine for any of the aforesaid purpose without giving सब notice। emergency छोड़ करके 3 days का notice में इस टाइप का visit में special officers mines में आ सकते हैं। facilities to be offered to the inspectors, every owner, agent and manager of the mine shall afford the chief inspector and every inspector any persons authorized under section 8 shall reasonable facilities for making any entries, inspection, survey, measures, examination or inquiry under the act. Next section, facilities to provided for occupational health survey, the chief inspector or an inspector or other official authorized by him in writing in this behalf may at time during normal working hours of the mine or any time by the day or night as may be necessary undertake safety and occupational health survey in a mine, after giving notice in writing the manager of the mine. The owner, agent, manager of the mine shall afford all the necessary facilities, including facilities of examination and testing the plant and machinery of the collection or samples and other pertaining to the survey and transportation and examination of persons employed in the mine, choose the survey, such inspection or officers। तो reasonable facilities mines management को provide करना है। Every person employed in the mine who is chosen for examination in any safety or occupational health survey under subsection 1 shall present himself in such examination at place as may be, shall furnish the information regarding his work safety in connection with the said survey. The time spent by any persons employed in the mine who is chosen for examination in safety and occupational health survey shall be counted towards his work time, so however that any overtime shall be paid at ordinary rate of wage. For this purpose of this subsection, ordinary rate of wage means the basic wage plus any dearness allowance and underground allowance and compensation in case, including such compensation if any occurring through the fees issued or food grains and edible oils as persons employed in the mine may, for the time being, to entitled to but does not include bonus other than the incentive for production or any compensation occurring through the provisions of amenities such as free housing, free supply of coal, medical and educational facilities, sickness allowance,
supply of kerosene oil, baskets, tools and uniform. Next, subsection 4, any person who on examination under subsection 2 is found medically unfit to discharge the duty which he was discharging in the mine immediately before such presentation shall be entitled to undergo medical treatment as at the cost of the owner, agent or manager with full wage during the period of such treatment. Fifth, if after the medical treatment the persons referred in subsection 4 is declared medically unfit to discharge the duty which he was discharging at the mine immediately before absenting himself from the said examination, and such unfitness is directly describable in his employment in the mine before such presentation, the owner, agent and manager shall provide such person with alternative employment in the mine for which he is medically fit, provided that where no such alternate employment is immediately available, such person shall be paid by the owner, agent and manager disability allowance determined in accordance with the rate prescribed in this behalf. Provided further that whether such person decide to leave his employment in the mine, he shall paid by the owner, agent and manager a lump sum amount by the way of disability compensation determined in accordance with the rate prescribed in this behalf. The rate under the provision of subsection 5 shall be determined having regard to the monthly wage of the employee, the nature and disability and other related factors. Next, the secrecy of information. All copies and extents from the register and other extracts from the registers and other records appertaining to any mine and all other information acquired by the chief inspector or an inspector or by any assisting him in the course of the inspection of survey of any mine under the act or acquired by any person authorized under section 8 or section 9A in the exercise of his duties thereunder shall regarded as confidential and shall not be disclosed to any person or authority unless the chief inspector or the inspector considered disclosure necessary to ensure the health, safety and welfare of any person employed in the mine or any other mine adjacent thereof. So, this information will be confidential. Nothing of subsection on shall apply to disclose any other information if so required to any court or a committee or court inquiry constituted or appointed under section 12 or section 24 as case may be, an official superior or the owner, agent or manager of the concerned mine, a commissioner for workman inspection appointed under Workmen Compensation Act 1923, the controller of Indian Bureau of Mines, any registered or recognized trade union, such other official authority and organization as may be specified on this behalf by the central government. The chief inspector or an inspector or any other persons referred in subsection 1 disclose contrary to provisions of this section and any such information as aforesaid without consent of the central government, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or a fine or with both. No court shall proceed to the trial of any offence under this section except the previous sanction of central government. Next section, the last section of this chapter is certifying surgeon. Central government may appoint qualifying medical practitioner to be certifying surgeon for this purpose of this act within such local limits or such mine or class descripting of the mines as it may assign to them respectively. Subject to such condition as central government may think fit to impose, a certifying surgeon may, with the approval of central government, authorized any qualified medical practitioner to exercise all or any of his power under this act or such period as certifying surgeon may specify, and reference to a certifying
surgeon shall be deemed to include reference to any qualified medical practitioner when so authorized. No person shall be appointed to be or authorized to exercise the power of certifying surgeon or having been so appointed or authorized or continue to exercise such power who is become the owner, agent or manager of a mine or is or becomes directly or indirectly interest therein or any process or business carried on therein or any part or machinery connected therewith or otherwise in the employment of the mine. The certifying surgeon shall carry out such duty as may be prescribed in connection with the examination of persons engaged in the mine in such dangerous occupations or processes as may be prescribed, the exercise of such medical supervision as may be prescribed for any mine or class or description of the mine where the causes of illness have occurred which it reasonably be believed that are due to nature of any process carried on or other condition of the work prevailing in the mine. So this was the in chapter 2 we learned some of these sample question. Which of the following statements is or are correct? The central government can appoint any person eligible for the post of chief inspector of mines. The chief inspectors controlling for all the territories in the country who is the mines act extent. No person shall be appointed as inspector who has an interest in any minor activities. Here only A statement is correct, only B statement correct, all the statements are correct, none of the statement correct. The right answer is all the statements are correct. सेंट्रल गवर्नमेंट एक चीफ इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं अगर उनको क्वालिफिकेशन सही है तो, और उन चीफ इंस्पेक्टर्स का कंप्लीट टेरिटरी की जिसमें माइंस एक्ट एक्सटेंड होता है उसमें उनका कंट्रोल में रहते हैं, और जिनके कोई माइंस में इंटरेस्ट है वो चीफ इंस्पेक्टर के हिसाब से अपॉइंट नहीं हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इसमें चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एग्जामिन एंड इंक्वायर ऑफ द माइन बाय इंस्पेक्टर. A. Matter connected with the health, safety and welfare of the person employed in the mine, the ventilation of the mine, the sufficiency of bylaws in relation. Only A and C are correct, only A and B are correct, all the statement correct, none of these statements are correct. Right answer, all the statements are correct. Choose the correct statement about the inspector to examine and inquire about the state of condition of the mine. A case where an offence under Mines Act has been committed, a search of any such place of provisions in relation, any register or other record appearing to the mine. Only A and B correct, B and C correct, all the statement correct, none of the statement correct, all the statements are correct. Next question, the power of inspector does not include, he can enter any place of the mine, he can make examination of the premises, arrest the manager or agent, take possession of any such article or substance which is hazardous. Yes, the answer C, arrest manager or agent, this the power inspector does not have, so this is the answer A hai, arrest the manager or agent. Next, the district magistrate can exercise the power of an inspector except dash section 20, 21 and 22, section 21, 21A and 60, section 22, 22A and 61, section 60 and 61. सही answer section 22, 22A and 61. Ordinary rate of wages means basic wage plus any DA only, basic wage plus DA and underground allowance only, basic wage plus DA plus underground allowance and compensation if any. Next option, basic wage plus any DA, underground allowance, compensation and bonus. Option C, basic wage plus DA plus underground allowance and compensation if any. Bonus, only bonus related to performance incentives is allowed in this ordinary wages, other bonus is not the part of basic wages. थैंक यू, आपने इस सेशन में ज्वाइन किया. इसमें हमारा
अगले वीडियो थर्ड चैप्टर ऑनवर्ड हर एक चैप्टर का हम लोग अलग अलग वीडियो बनाएंगे और आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपको इसको लिंक मिल जाएगा, इसी में आपका डिस्क्रिप्शन में एक कंप्लीट वीडियो आपको एक यहाँ पे कनेक्टेड होगा। और आपको उम्मीद करते हैं आपका स्टेटरी एग्जामिनेशंस के लिए ये बहुत यूज़फुल